राम और उसकी पत्नी दो लोगों का ये परिवार बहुत ही खुशी से रहता था। उनकी खुशी में चार चांद तब लग गया जब उन्हें पता चला कि वो माता पिता बनने वाले हैं। राम अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, पर गांव में माँ के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के कारण उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल भरा दिन देखना पड़ा। हॉस्पिटल दूर होने के कारण राम की पत्नी ने अपने बच्चे को रास्ते में ही जन्म दिया था। राम को एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम रामू रखा। इसी के साथ रामू की माँ को एक डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से वो सही से चल फिर नहीं सकती थी। राम ने अपनी पत्नी के इलाज में बहुत मुश्किलें उठाईं। उसे अपना खेत तक बेचना पड़ा और इन सभी की वजह था वो बाल विवाह जो रामू की माँ का रामू के पिता के साथ हुआ था। पर रामू ये सब समझने के लिए बहुत ही छोटा था। सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला गया। रामू का बचपन में ख्याल उसके पिता ने ही रखा, क्योंकि एक बच्चे का ख्याल रखने के लिए अभी उसकी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं थी। रामू की माँ रामू को बहुत प्यार करती थी और खुशी की बात तो ये थी कि उसे एक छोटा भाई मिलने वाला था। पर इस बार जो हुआ वो मुश्किल नहीं थी, वो एक हादसा था। हॉस्पिटल जाते वक्त रामू की माँ का पैर फिसला और ज़मीन पर गिरने के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया। इस हादसे ने रामू को पूरा झकझोर के रख दिया और उसने अपने आप से वादा किया कि जो उसकी माँ के साथ हुआ वो अब किसी के साथ नहीं होगा। अब रामू रोज़ शाम को अपने पापा के साथ बैठकर पढ़ा करता था और कहता था, पापा, जो मेरी माँ के साथ हुआ वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। अपने बेटे की लगन को देखकर अब रामू के पास भी एक नई उम्मीद आ गई थी और उसे लगने लगा कि मेरा बेटा ज़रूर कुछ करेगा। यह देखते हुए उसने अपने बेटे का दाखिला एक बड़े से स्कूल में कराया और वहाँ रामू मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। रामू हर महीने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखा करता था और राम उसे पढ़कर बहुत ही खुश होता था। और जब उस चिट्ठी में कोई अवार्ड मिलने या फिर फर्स्ट आने की बात लिखी होती थी तो राम की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। धीरे धीरे बहुत टाइम बीत गया और रामू अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव वापस आ गया। और अब ये वो समय था जब रामू को अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करना था। रामू ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, पर किसी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस से उसे बुलावा आया और वहाँ जाकर उसने अपने गांव की समस्या को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया। रामू की बात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने समझा और जल्द ही रामू के गांव में एक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। और तब से लेकर आज तक किसी भी माँ को अपने बच्चे को लेकर कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। So as the topic of our video was bringing hope, so we thought of creating a climax which literally requires a hope. So we thought of showing love shared by mother and son. And this situation which is shown in the video is quite relatable to us because we come from a rural background and where this situation is happens quite often. So we thought of using this concept. And the challenges faced by us were many. Like the biggest challenge was of making sure that we worked in sync.
because at that time it was lockdown and physical meeting was not at all possible. And the second challenge was of convincing the characters, because we reside in rural part of India and the people are very shy. We had very limited resources, like limitations of props were there, uniforms, and suitable clothes. And even the suitable setting was not available to us. So we thought of employing the light and shadow technique, which just suited our video, and we did it. We had to do the editing with our mobile phones only, because we didn't have any laptop. We did not have any paid app for that. We used the app InShot to edit our video, and we did with that only, and that's all. Okay, and talking about the impact that the film would do on the viewers. So first of all, it would simply move them emotionally, and it would force them to think about the times when life was not that easy. It would make them think about a problem, or rather a social evil, which is child marriage. So child marriage is has been a social evil because it is no less than a pandemic. The consequences which it has once had to be faced by the complete family, and the they also persisted for a chronic period, and it has a really negative impact on the physical and mental health of both mother as well as the child. And the second reason second problem that was mentioned in the video was lack of hospital facilities in the rural areas. So that is one of the most common problem, and that even I myself have experienced once. And this problem sometimes results in delay of proper treatment, and because of this, the consequences can be sometimes very risky or even painful. And education, if we talk about the solutions, education is the only viable solution. Like as in the video, the main protagonist was Ramu. So we don't need only one Ramu. We need many Ramu who can come together and make a big change. That's all. Beautiful, beautiful movie. Very well done. And I have to point it out, amazing use of limited resources. To be honest, whatever you told me that you didn't have a lot of time and a lot of props with you, and all of the whole movie was actually edited on InShots app. Amazing, Yes. amazing job. Yes. It's certainly one of the most creative of the lot that I have seen. The concept is so mature, and even the execution has been really flawless. And as you pointed out, the light and shadow that you used, it cuts down quite a lot of props, because of the lack of the availability. It cut down the costumes, and it cut down the let's say the nuances in the acting that you will see when the camera is pointing on your face. It cut down that, but still the acting, even as a shadow, as the people were acting, I felt like it was very sincere. So kudos to the whole team. And Yes. Thank you, sir. secondly, the music that you use, it was complementing each and every act. It was an emotional, not over the top. It was just the right music that you used, and well done on that part. And who was the narrator of this story? I was the one. Oh, amazing voice that you have. Thank you, It sir. was really calming. So very well done. And I hope that you do more works like these, narration, or giving a voiceover. I might contact you for voiceover in any of the films that I do in future, maybe. Thank you, sir. Very well done. First of all, 10 out of 10 for story, creativity, sound design, editing, like all the technical stuff. Like I think this is a great example of like when you have limited resources, how to be smart about that and make your job easier instead of making it harder.